Good morning, students. Today we will discuss about the sixth class social science, in which we will start the chapter first, that is the Earth and solar system. In this, we will learn about the universe and also discuss about some further solar system. So we will start further discuss about this chapter. That is, we will discuss about this table, a comparative study of planet, in which the unique property of a planet and a significant tell about the planet. Now, we will also discuss what is the difference between the star and planet. Now today we will discuss about Earth. Earth, that planet upon which we can live. वो planet जिस पे हम रह रहे हैं. If you look at the photograph of the Earth taken from the space, you can notice blue and white atmosphere. The blue color is also due to presence of the vast water bodies on our planet. Let us now read about what makes Earth as a unique planet. When we see the picture of our Earth, then we will see this is a blue in color because a vast water is present on the Earth planets. So we will see what fact makes the Earth unique. क्या जो तथ्य हैं हमारे वो अर्थ को एक तरीके से अलग बनाते हैं सभी से. तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर. अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट. अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट. देयर आर ए नंबर ऑफ स्पेशल फीचर विच सेट अपार्ट अर्थ फ्रॉम द अदर planets. Some special feature are present in the Earth that can be make it a unique planet. Now we will discuss the first. Special feature, that is the Earth is the only planet in the solar system which support life, as it has a balanced atmosphere, adequate temperature and presence of water. Earth is only a one planet that support the life because it has a balanced atmosphere and an adequate temperature is also present and presence of water is also present. अर्थ पे ही हमारे लाइफ पॉसिबल है और कोई भी प्लैनेट अभी तक नहीं है जिस पे हमारे को लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है, हवा भी प्रेजेंट है, पानी भी है और टेम्परेचर जितना हमारे चाहिए, हमारी बॉडीज को चाहिए, वो भी अर्थ पे क्या है, प्रेजेंट्स है. सो दिस इज द first special feature that will make Earth as a unique planet. Now the second is Earth is just at the right distance from the sun, get required amount of heat and light to support life. The distance of the Earth from the sun is such that it is neither too hot nor too cold. The right positioning of the Earth help it to receive a right mix of light and heat which support life. So the second feature is that Earth is at a right distance from the sun, so it can take a required amount of heat and light that will support the life process. अर्थ जो है एक उचित दूरी पे है सन से, जिससे क्या है कि इसके ऊपर जो लाइट है वो एक एडिक्यूट अमाउंट्स के अंदर आती है. एडिक्यूट्स जो जितनी हमें चाहिए लाइट उतनी हमारे लिए आती है. ना ही तो इसका जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा कोल्ड है और ना ही इसका जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा हॉट है, बिकॉज अगर ज्यादा गर्मी होती है हम नहीं रह पाएंगे और अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो उसमें भी हम नहीं रह पाएंगे. सो दिस इज द सेकेंड स्पेशल फीचर. नाउ द नेक्स्ट इज third is sufficient water. Sufficient water present in various water bodies of the earth makes it the only planet which sustains life. We all know that the human being, planets and animal cannot live without water. Water is available on the earth due to the right kind of the temperature on its surface, and it is present in all its three form: ice, water and vapor. So
water presence on the earth will make it a unique, because we know that all the human being and planet requirement are a water. Without water we cannot survive at any planet. So sufficient amount of water is present on the earth. एक हमारी उचित मात्रा में हमारे अर्थ पे पानी है, जिससे हमें पता है कि पानी के बगैर हम भी नहीं जिंदा रह सकते, हमारे प्लांट्स नहीं रह सकते, एनिमल्स जिंदा नहीं रह सकते, तो विदाउट पानी हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए अर्थ पे पानी प्रेजेंट है तो हमारे लिए लाइफ क्या है, पॉसिबल है। विदाउट पानी हम कहीं पर भी नहीं रह सकते। इसीलिए जो वाटर की प्रेजेंस है, दैट विल मेक इट ए यूनिक प्लैनेट, दैट विल मेक इट ए यूनिक प्लैनेट। दिस इज द थर्ड फीचर्स। नाउ fourth is balanced atmosphere. Fourth is the balanced atmosphere with oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapor and inert gases make earth the only planet to have life. The right mix of all these gases enable living being to breathe. The atmosphere also form a protective cover that does not allow the harmful ultraviolet ray to reach the earth. Now it has also a balanced atmosphere present, that we also know that we have to breathe. We also require oxygen gas. If the oxygen gas is not present in adequate amount of the atmosphere, then we cannot survive at any planets. So earth has a balanced atmosphere. In that carbon dioxide, nitrogen, oxygen, water vapor all are present in an adequate amount. जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सारी की सारी गैसें एक सही मात्रा में प्रेजेंट है, जिससे हमारी लाइफ क्या है, पॉसिबल्स हैं। क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम ब्रीथ नहीं कर सकते, विदाउट एयर हम ब्रीथ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इट ऑल्सो फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवर बिकॉज इट कैन नॉट अलाउ ए हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे टू रिच द अर्थ। ये हमारे पास जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनको भी हमारे अर्थ पे आने नहीं देता है। सो दिस इज द बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर present in the earth that will make it a unique planet. So it's all about the today's lecture, in which we see that what features will make the earth as a unique planet. क्या जो special features हैं जो अर्थ को एक unique planet बनाते हैं। So you have to write all these features, and also learn about all these features. So this is your today's homework. Thank you.